Unacademy's YouTube channel. This is Ashish and chemistry educator for IIT JAM 2021. Friends, those who are not on the Plus platform of Unacademy, आप please उस पे आइए, then you will get an aura of educators. आप काफ़ी सारी नई चीज़ें आप सीखोगे वहाँ पे and you will get an good experience. बिकॉज फ्रेंड्स नाउ वी आर इन लॉकडाउन मोड है ना, सभी चीज़ें बंद है. एवरी योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड से आपके ट्यूटोरियल्स, ब्रांडेड ट्यूटोरियल्स है, आपके जो सब चीज़ें बंद है. अनअकैडमी इज द only live platform which is available to you. Get an optimized use of your this time by subscribing Unacademy's Plus platform, because यही एक प्लेटफॉर्म आपको लाइव इंटरेक्शन देता है with your educators to clear your doubts, and as well as you can learn the things, है ना. And try to subscribe Unacademy's Plus channel by using my referral code, that is GHAAJ24, to get a 10% discount. फ्रेंड्स, 10% डिस्काउंट की बात नहीं है. जो आपका अभी जो समय जो आपका वेस्ट हो रहा है, जैसे से वंस दिस लॉकडाउन गेट्स ओवर, तो एवरी यूर से रेगुलर कॉलेज एजुकेटर्स या आपके जो प्रोफेसर्स एंड यूनिवर्सिटीज विल try hard to complete your examinations in the scheduled time, because it's already 15th of April, है ना. Today is the 9th of April and 6 more days are left for say 21 days lockdown, but still there is a time to prevent, that is to maintain the social distancing and prevent to spread this coronavirus by staying at home. This is a personal urge from me. Maintain social distancing, maintain the government orders, friends, because they are helping us to save the humankind, and this way we can help to the nation's call. So friends, today's topic of our discussion is to determine the group period block in the periodic table, that is tricks to determine the group period and ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल्स. इसका क्या चीज़ है, मतलब इसमें बेसिक चीज़ है फ्रेंड्स. ये काफ़ी बार आपके एग्जामिनेशन में इसमें काफ़ी बार चीज़ें पूछी जाती है, और ये काफ़ी बेसिक चीज़ है. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको कुछ ट्रिक्स याद रखना है. ऑन बाय रिमेम्बरिंग दिस ट्रिक्स यू विल एबल टू डिटरमाइन द ग्रुप, कौन से ग्रुप को वो बिलोंग करता है, कौन से पीरियड को दैट पर्टिकुलर एलिमेंट आपका बिलोंग करता है, कौन से ब्लॉक को वो एलिमेंट बिलोंग करता है, आप उसको जान सकते हो. फ्रेंड्स, अभी मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसको ग्रुप बोलते हैं, किसको पीरियड बोलते हैं और किसको ब्लॉक बोलते हैं. फिर भी एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि दिस इज़ द वेरी बेसिक टॉपिक. इसके ऊपर काफ़ी सारे सेशंस हो चुके हैं, बट स्टिल देयर इज सम ट्रिक्स यू शुड रिमेंबर to determine the group period and block in the periodic tables. What are the tricks? So friends, first, to determine the group period and block in the periodic table, the period of element corresponds to the principal quantum number of valence shell. ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए कि जो पीरियड क्वांटम नंबर होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा. यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वी विल रिप्रेजेंट इट बाय से एन नंबर ऑफ शेल्स. तो आपका वैलेंस शेल क्या हो गया, क्वांटम नंबर के हिसाब से एन शेल हो गया, है ना. तो पीरियड जो होगा, अगर वैलेंस शेल में कौन सा कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसके ऊपर से उसका पीरियड जाना जाएगा. यू विल डिटरमाइन पीरियड ऑफ एन एलिमेंट विथ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल. बात समझ में आई है कि नहीं आई है फ्रेंड्स? अगर नहीं समझ में आई होगी तो यू कैन
raise your hand, है ना, by just dropping a comment in the comment box. अभी पीरियड हमने जान लिया कि जो वैलेंस शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसमें से हमको कौन से पीरियड का वो एलिमेंट है वो हमको पता चल जाएगा. से NS1 या NS2, तो इट विल बी ऑफ द सेकेंड पीरियड. ठीक है. एंड से NS6, तो उसका पीरियड है ना, इट्स एक्चुअली आपका सिक्स पीरियड का वो एलिमेंट होगा. आर यू गेटिंग मी? कांचन महंतो, वेरी हेलो कांचन, आप क्या करते हो एंड व्हाट आर यू एस्पायरिंग फॉर? दैट इज IIT JAM. आर यू इंटरेस्टेड इन IIT JAM या फिर एनी अदर यूनिवर्सिटीज यू आर अपेयरिंग, दैट इज BHU, JNU, DU? आप व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स? आप कौन से ईयर में हो वो भी चाहिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी, है ना. सो द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट, the block of an element corresponds to the type of orbital which receive the last electron. यानी block वो आपका. So Kanchan, are you on the plus platform of Unacademy? Mahanto means you are from Odisha. You are from Odisha, Kanchan. Okay. So are you on the plus platform of IIT Unacademies? Okay, West Bengal. Very good. Are you on the plus platform of Unacademy? So try to subscribe on the plus platform, friend. I am giving you my referral code. You can use this referral code to get an 10% discount. अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करने के लिए आपको पहले वो लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है. चूज योर गोल, दैट इज IIT JAM. देन दे विल आस्क यू फॉर द रेफरल कोड. दिस इज माय रेफरल कोड, फ्रेंड, एंड इट इज अ हाई टाइम, है ना. ये आपके लिए हाई टाइम है एंड योर स्टडीज विल बी कंटिन्यूइंग because say in the first or the second week of February your IIT JAM exams will be conducted. ठीक है. तो try to be there, friends. And one more thing, there is a special class of mine, that is Ashish Shah. You can just download the learners app of Unacademy, choose your goal IIT JAM, subscribe it by using my referral code. Friends, there is 10% डिस्काउंट की बात नहीं है. जो टाइम अभी वी आर इन द लॉकडाउन मोड, यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म वेरी वेल टू द ऑप्टिमम लिमिट, बिकॉज वंस द योर कॉलेज स्टार्ट्स या आपके ट्यूटोरियल स्टार्ट हो जाएंगे, देन यू विल गेट अ लेस टाइम. आर यू गेटिंग मी? सो the block of an element corresponds to the type of orbital which receives the last electron. यानी आपके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में ऐड होगा उसके ऊपर से आपका ब्लॉक डिसाइड होगा. जस्ट लाइक से SPDF. ठीक है. अगर मान के चलिए आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर p ऑर्बिटल में अगर ऐड हो रहा है तो आपका वो p ब्लॉक एलिमेंट्स, दे विल बी कॉल्ड एज अ p ब्लॉक एलिमेंट्स. आर यू गेटिंग मी? Are you getting me? And the group of an element which is known from the number of electrons in the valence shell of the or the penultimate shell. अभी इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ग्रुप हमको डिसाइड करना है तो आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, या उसके लास्ट बट वन शेल, पेनल्टीमेट शेल इज द लास्ट बट वन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके ऊपर से हम उसका ग्रुप डिसाइड होगा. सो पीरियड किस तरीके से डिसाइड होगा? पीरियड विल ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना. यानी वैलेंस शेल में कितने उसके इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है. देन व्हाट विल बी द ब्लॉक? ब्लॉक विल बी कौन से ऑर्बिटल में, विच टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स विल रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स. आ रही है बात ख्याल में? देन
The group will be of an element is known from the number of electrons in the valence shell या penultimate shell, यानी वो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है या उसके लास्ट बट वन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर से उसका ग्रुप पता चलेगा. दिस मच इज क्लियर फ्रेंड, दिस मच इज क्लियर. So let us learn the steps to determine period, group and block, because there are different rules for each period and for D and F group. ठीक है. So for period, what is the, how you can say recognize the period? What is the first condition? First condition is that कि सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो एलिमेंट का आना चाहिए. This is the first priority to determine the period. Get it? Are you getting? Do you know this thing? है ना, आपको ये चीज समझ में आ रही है. जिस किसी का भी आपको एलिमेंट का अगर पीरियड जानना है तो फर्स्ट यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन find the highest value of ion, that is the principal quantum number of the valence shell. वो क्या करेगा, जो वैलेंस शेल जो होगा, हाईएस्ट प्रिंसिपल जो होगा, वो आपका पीरियड डिसाइड करेगा. यानी कौन से पीरियड को वो बिलोंग करता है वो आपका डिसाइड करेगा. जस्ट फॉर एग्जांपल सर, एलिमेंट विथ एन एटॉमिक नंबर 16, व्हाट विल बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3d4. तो हाईएस्ट क्वांटम नंबर क्या हो गया? एन शेल, थर्ड शेल हुआ, दैट इज द लास्ट शेल, 3s and 3d. So therefore it belongs to the third period. This much is clear friend? Akash, Kanchan, this much is clear? Now to determine the block, what is the trick? Again you have to write the electronic configuration. Friends, for knowing this, to know the determine the period, block and group, you should be very good in writing the electronic configuration, because then only you can determine your period, group and block. Are you getting me? Because हम काफी बार lightly ले लेते हैं ये चीजें. इट शुड नॉट बी द केस. आपने काफी ईमानदारी से ये चीज को प्रैक्टिस करना है, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू प्रैक्टिस दिस थिंग यू वोंट अंडरस्टैंड, यू वोंट अंडरस्टैंड कि हाउ टू determine the period, block and group, because this is a very simple thing and you should know the tricks. I am giving you the tricks how to determine. Are you getting me? So for block also you have to write electronic configuration, and to find the block where last electron enters. अभी ये चीज बड़ी simple है. There is no rocket science friends. Your presence of mind will do. Your presence of mind will do. What will be it called? कि जैसे element belong to the that particular block. अभी हम कैसे पता चलेंगे? In example, in above example, say with the आपका electronic configuration of 16. If the last electron enters in the third shell and d orbital, so it will belong to the d blocks. Are you getting me? Say for example, element with atomic number 20, what will be its electronic configuration? 1s2 2s2 2p6 3s2 3d4 and 4s2. Here the last electron enters in the s block, that is 4s2. So the elements belong to the S block. आ रही है बात ख्याल में? आ रही है बात ख्याल में friends? Because these are the very simple things. These are the very simple things. You can say by knowing the electronic configuration, by just writing the electronic configuration, you can write down the which period it belongs, which group it belongs, the particular element. But for that you should write the electronic configuration very correctly, because electronic configuration, writing the proper electronic configuration and grouping of that electronic configuration is an immense importance.
आर यू गेटिंग मी? बात समझ में आ रही है? ओके, वेल डन कांचन, बट कांचन ट्राई टू सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, है ना? और कल शाम को मेरी 7 बजे स्पेशल क्लास होगी ऑन द इंट्रोडक्टरी. देर इज इंट्रोडक्टरी सेशन फॉर एन say isolation of general methods of isolations and purification for of elements. This topic I had attempted on an academy's platform already. It has we are just today I had started this topic on the plus platform, and tomorrow there is a special class, है ना? तो special class is free to air, friend, and you have to be there. And you are a second year student and appearing, that is for IIT JAM 2021, and you had made a plan. You had made a plan to participate, yeah, for the IIT JAM examination, so it is very useful for you. Okay, so friends, how to determine the group? This is also very important because आपने पीरियड जान लिया, आपने ब्लॉक जान लिया, है ना? आपने तो अभी ग्रुप कैसे जानोगे, इन विच ग्रुप इट इज बिलोंग, बिकॉज ऑन दैट बेसिस यू कैन से enter, you can write the things, and again you have to be very good in writing the electronic configuration. To determine the period, block and group, you should be very good and very precise in writing the electronic configuration. Are you getting me? Are you getting me? So to determine group also, you have to write the electronic configuration and focus on the outermost shell or the valence shell, कि किस कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटरमोस्ट शेल में है. Friends, there is a need to understand the thing. Are you getting me? Are you getting me? Because क्या होगा कि ये चीज मैं फास्ट लेके 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, बट टू अंडरस्टैंड द थिंग इज द माई मोटो. फास्ट लेके हमको करना क्या है? ओके, सो फॉर ग्रुप ऑल्सो you have to be very specific in writing the electronic configuration, because it is a need of the hour. ठीक है, need of the hour in the sense कि you should write it very precisely, because I had seen many students who don't write an electronic configuration properly, though they are doing their graduation degree. Are you getting me? So to know the group, you have to focus on the outermost shell or the valence shell, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें हैं, उसके हिसाब से वो आपका ग्रुप होगा. Are you getting me? Okay, so what are the rules for as block elements? That is, it is equal to the number of electrons in the outermost shell or the valence shell, and that is a principal quantum number. Example, अगर मैं लेता हूं जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d6 and 4s2. So your last electron enters in the s block. ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 है, तो it will be, its group is 2. Are you getting me? समझ में आ रही है Kanchan? And imagine why. Please give me your true identity, friends. I know this is not your true identity. Okay, then what are the rule for p block elements, friends? For every block element you should be very precise in the electronic configuration. ठीक है, I am repeating the same thing because this is the main criteria to know the, say, your block and group and period.
Friends, I am not talking about you specifically. There are many students who don't understand how to write electronic configurations, and I am for those students. ठीक है, आ रही है बात ख्याल में? So, rule for what are the rule for p block elements? How you can, what are the rules? Because without knowing the rules, we can't determine the group. है ना? आ रही है बात ख्याल में? It is equal to the number of electrons in the outermost shell plus tan. Just for p block elements, you have to add with the number of electrons plus tan. आ रही है बात ख्याल में? Let us make an element with an atomic number 7. किसका atomic number 7 है? Can you give me the imagine why? I am asking a question to you. Atomic number 7 किसका आएगा? Hello, I'm waiting for your answer, friend. Imagine why. At what is which element has an atomic number 7 in periodic table? Yes, very good. You are a quite intelligent guy. I appreciate your intelligence. है ना? So, electronic configuration for atomic number 7 is 1s2, 2s2, 2p3. Then, last electron enters in the p block. That is group 5. ठीक है? कैसे? 2s2, 2p3. That is 5 plus 10. So, what will be the group? It belongs to the group 15. Is it correct? Nitrogen belongs to the group 15. Is it right or wrong? Mr. Imagine why? Mr. or Miss, I don't know. There is no need to love me, friend. There is no need to love me. Just respect the person. It is the most need of the hour. है ना? And what are the group 15 elements are called? What is the other name? They are representative elements. है ना? So what will be it called as? So show me your true identity. It will be nice of you. What are the group 15 elements are known as? They are representative elements. Na? So give me a other name for group 15 elements. This is a very common name, and the give one more characteristic feature. You are an intelligent enough, है ना? So give me the specific name of group 15 and what is why it is called as that. मतलब उसकी क्या characteristic है जिसके वजह से it is not used. Mr. Imagine why. So rule for D block elements. Rules for D block elements. हमने S block पढ़ लिया, P block पढ़ लिया. Now the rules for D block elements. It is equal to the number of electrons in outermost shell per number of electrons in penultimate shell. That is n-1 subshell. So let us make an element with an atomic number of 21. How you will be? What is the electronic configuration for atomic number 21? It is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. ठीक है, अभी लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है? इट इज इन d ऑर्बिटल, तो इट विल बी कॉल्ड एज एन d ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, हेंस ग्रुप नंबर जो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल प्लस इट्स पेनल्टीमेट शेल, दैट इज 1 plus 2. Then it will be, its group will be 3. आ रही है बात ख्याल में? Are you getting me, friends? Because these are the some simple tricks. You can say by applying these tricks, you can determine the group, period and block elements of the elements by simply remembering the basic things. But what is the basic thing? The basic thing is that you should write the electronic configuration very well. I am insisting on the same thing. Electronic configuration. Those who are writing it well, there is no problem. But
those who are weak in this writing the electronic configuration, though you are a undergraduate student या पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट, देर इज नथिंग रिटर्न कि जो अंडर स्टूडेंट होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते आ जाता है, या जो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट है उसको आ जाता है या आएगा करके, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है. ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. The more and more practice you will get to practice, you will be the perfect in writing the things. Make your own notes. This is my personal request to all of you. You are belong to the Unacademy Plus platform or not, but for me you are a student and you should make your own notes. This is a personal tip from me. Okay, so friends, what are the rules for F block elements? Again, all the elements of F block belongs to group 3. अभी ये चीज काफी अच्छी है कि ये आपको F block elements आपको ग्रुप 3 में ही मिलेंगे. ठीक है, अभी आपको क्या करना है? If their atomic number is say from 58 to 71, it belongs to the 6th period of F block. What are it called as? उसको हम क्या बोलते हैं? Mr. Imagine why? Can you answer me? Kanchan, are you there? What are the F block 6th period is called as? Friends, आप कोई भी बुक से you can prepare your own questions, है ना, और प्रैक्टिस कीजिए. सेम चीज you had and the best tool in your hand, that is your mobile, if you are using a smartphone and you are a quite smart guy, है ना, तो आप यहाँ से भी you can take sample question papers and you can solve it from Google, but don't entirely depend on the any one of the resource. Try to collect the things from different. When you are searching for Google, then also refer the book, the same topic from the book. If it relates with the book, then only you can rely on the Google. Are you getting me? आ रही है बात समझ में? So what are the F block elements? अगर मान के चलिए मिस्टर imagine why, what are the 6th period F block elements are called? 6th period F block elements are called. You should know, and you are knowing this. It is called as an lanthanides, and atomic number ranges from 58 to 71. सही है ना? सही है. और अगर उनका एटॉमिक नंबर 90 से 103 है तो दे आर इन बिलोंग टू द 7th पीरियड एंड F ब्लॉक्स, दैट इज दे आर यस इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या हम उसको क्या बोलेंगे? एक्टिनाइड्स बोलते हैं. And why it is called as an inner transition elements, या rare earth metals? Because they are radioactive elements. ठीक है. अभी friends, this is an important thing, because if we take an element like say xenon, तो उसका electronic configuration क्या होगा? What is the atomic number of xenon? It is 64. Therefore, period 6, as it's belong to the 58 to 71, है ना? आ रही है बात ख्याल में? Are you getting me? So friends, these are some practice questions especially for you, how to determine the period, group and block elements of the various elements. I had taken up say 5 examples. First one is with atomic number 5 and electronic configuration is 1s2 2s2 2p1. तो आपका पीरियड क्या हो गया? सेकेंड होगा. क्यों? क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन्स कौन से वैलेंस शेल कौन सा है? सेकेंड शेल है ना. तो ब्लॉक विल बी p. What will be the group? It will be group will be 13. That is 1 plus 2 plus 10. हमको 10 ऐड करना पड़ेगा. Are you getting me? Likewise friends, for atomic number 13, atomic number 24 and atomic number 48 and 55, I had taken a various groups and various block and various period के examples मैंने यहाँ पे लिया हूँ. I hope कि
these are the tricks. By just applying these tricks, you can easily determine your period, group, and block of the elements. Friends, I hope ki this topic is clear to you. By just applying simple tricks, but for that you should know the periodic table well. Electronic configuration, you should write the electronic configuration very well. Are you getting me, friends? So thank you for sparing time for me, friends. आई होप कि ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी, बिकॉज दिस आर द सिंपल ट्रिक्स विच यू कैन apply the while writing your examination papers, because आपको उतना टाइम वहाँ पे नहीं रहेगा, और आपको यहाँ पे जितना आपके पास में समय रहेगा उसमें ये चीज़ अप्लाई करके यू विल get, because they can ask you say atomic number of 64, which it will belong, which group, which period. Then you should know the electronic configuration. By just writing the electronic configuration, आप इसमें से काफ़ी सारे अच्छे तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो. And I told you, Mr. Imagine Why या Miss Imagine Why, कि practice for practice just use the Google, है ना. You can search the topics and it will give the chapter wise, topic wise MCQs. Try to solve it there, because you are supposed to be appeared in the 2021 JAM. ठीक है. Are you on the plus platform of Unacademy? If not, then subscribe it for it, and by using my referral code, that is JHAAJ24. ठीक है. So friends, this is Ashish here signing off for today's YouTube session of Unacademy's platform. I'm thankful to you for joining me. Take care, friends. Take utmost care. God bless you all, friends. All the best for your studies. All the best for your life, friends.